I request that those of you who are relying on watching the video of this, please do it in live class, because here you will have to write answers, you will have to identify themes, and it is better that you do these things in class. बाद में वो it would not be that effective. Okay, so climate as a theme I have identified in the last 40 years. Now, what did you study? Those of you who prepared polity के लिए, sorry, geography के लिए prelims के perspective से, what are the topics you studied in climate? Temperature, pressure. Yes, most important thing that you studied is first you studied atmosphere, then you studied temperature, then you studied pressure. With temperature and pressure, you will be building pressure belts, right? एक बार pressure belt बनाना आ गया, तो pressure belt और temperature pressure से you will be then moving to clouds and rainfall. When you know clouds and rainfall, then you will move to advanced climatology, that is cyclones, tropical and temperate cyclones, then other weather phenomena, है ना? So that is to understand geography in a structural way. Now I will be giving you the background of some of these topics. अभी आपको लगेगा कि why am I telling you about some of the basics of pressure, not the entire basic, just what is required at this stage, but you will realize I'll show you in the form of questions that UPSC asks एक step पहले का, and then it asks the topic that you think कि ये mains में आएगा. Okay. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. So let's see first the themes. Unlike most other parts of the country, why is Tamil Nadu coast wettest in November, December and not July, August? What is the broad theme here? First, let us identify themes. So, what is the theme? Can anybody identify? See, this is a brainstorming session. Monsoon. Very good. Retreating monsoon. Monsoon. No. Those of you who are saying retreating monsoon is same as your southwest monsoon, है ना? वो monsoon India से withdraw होते जाती है, उसको retreating monsoon कहते हैं. And I'll teach you monsoon, I'll teach the difference की withdrawal of monsoon को retreating monsoon कहते हैं, right? But यहाँ जो rainfall होगी, we will see that is due to northwest monsoon. जिस monsoon की आप बात कर रहे हैं retreating monsoon, that is northeast. The monsoon that you are talking about is your summer monsoon or southwest monsoon. So we will study monsoon in detail. What are the characteristics of monsoon in India, and types of rainfall that occur in India? Those parts we will do. But does anybody here could not identify ये theme की monsoon कहाँ से आया? ऐसा कोई है? चलिए. अच्छा, रिट्रीटिंग वालों को समझ आ गया ना? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन योर? सर नॉर्थ ईस्ट मानसून ही ना है ना रिट्रीटिंग मानसून? नहीं, रिट्रीटिंग मानसून किसको कहते हैं? जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो विड्रॉ करते जाएगी. जैसे आपका जो आईटीसीजेड था, जो प्रेशर बेल्ट था, वो प्रेशर बेल्ट पहले इंडिया के ऊपर यहाँ था, वो मॉनसून ट्रफ बोलते हैं उसको. ये मॉनसून ट्रफ नीचे शिफ्ट होता जाएगा, तो जो विंड्स पहले यहाँ जाके मिलती थी, वो विंड अब यहाँ जाएगी.
फिर वो और नीचे जाएगा, इट विल गो टू अंडमान एंड निकोबार एंड फाइनली एग्जिट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून और विड्रॉवल ऑफ मानसून. अच्छा ठीक है. सर, ओके दिस ओके. इज डिफरेंट फ्रॉम दी विंटर मानसून, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून. जो कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून है क्या यार, ये सब चीजें अभी आपको क्लियर कर दूंगा जब विंड्स वगैरह कराऊंगा. बट बहुत सिंपली, इज इट नॉट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स? यस. और यही विंड होनी चाहिए थी ना यहाँ पे. साउथ वेस्ट मानसून तो एक एबनॉर्मेलिटी है, विंड ने 180 डिग्री अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है. यस और नो? यस. तो इसीलिए वापस से नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है समर के ये मंथ्स के बाद विंटर के सीजन में. एंड विंटर में इसीलिए दो तरह का रेनफॉल होती है. एक होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, दूसरा रेनफॉल होगा आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से, बट सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट. ठीक है. वी विल डिस्कस दिस मॉनसून एज अ टॉपिक पे एक क्लास होगी, पूरी क्लास नहीं बट आधी क्लास मॉनसून एज अ टॉपिक, बिकॉज अभी मैं दिखाऊंगा 2017, 18, 9 दे हैव आस्क्ड रिपीटेडली मॉनसून इन वेरियस वेज. ओके. सो फर्स्ट थीम दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, यहां पर मैं थीम लिखता जा रहा हूं, इज मॉनसून. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, मॉनसून इज नोन टू बी द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सी. एक्सप्लेन हाउ this energy helps the entire ecosystem of the economic ecosystem of the country. In what the country can be prepared to fight the vagaries of monsoon. Now very interesting, tell me the themes, identify कीजिए इसमें. Monsoon is known to be the energy released by the sea. क्या थीम है मॉनसून का? ये सब थीम है. Winds. Winds. Okay. And is the energy released by the sea winds? In fact, winds cause ocean currents. उल्टा होता है. Is it not talking about the origin of monsoon? Yes. है ना. So there is a sub theme which we will do in monsoon only. जब हम monsoon topic करेंगे तो origin of monsoon, तो ये यही पूछ रहे हैं. है तो theme monsoon, but it is asking about origin. How does it this affect the economic system of the country? That is a separate system. एक theme की economic impact of monsoon, cultural impact of monsoon, then socio-political impact. Does monsoon have a socio-political impact on the country? Yes, a country which employs 45% of its workforce directly in agriculture and 66% directly and indirectly, does monsoon have an impact? India Yes. को Indian subcontinent क्यों बोला जाता है? Why is it called Indian subcontinent? Because it has a continent-like characteristic. और उसके लिए दो features हैं which are very very important. One, very tall mountains in the north, and one monsoon. So it gives India a continent-like climate to a country, right? Monsoon unifies the country like no other force, है ना. तो एक हो गया what are the various significances of. तो ये second जो है ये बार बार पूछेंगे. 2016-17 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देखिएगा सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है. सो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून इज अनदर थीम. अब तीसरे वाला कौन बताएगा मुझे कि क्या पूछ रहे हैं? इन व्हाट द कंट्री, इन व्हाट वे छूट गया, द कंट्री कैन बी प्रिपेयर्ड टू फाइट द वेजरीज ऑफ मॉनसून. Disaster management. So What in uneven disaster? nature of monsoon. What? Be more specific. So El Nino, La Nino effects. El Nino La causes what? So either floods or drought. Very good. Either floods or droughts. तो इन्होंने यही पूछा है, फ्लड मैनेजमेंट और ड्राउट मैनेजमेंट. या तो मॉनसून फ्लड्स करेंगे, यू सी इन असम गुवाहाटी इज सबमर्ज्ड राइट नाउ, और देयर विल बी ड्राउट. यहाँ पर मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, और उसके बाद फ्लड मैनेजमेंट और ड्राउट मैनेजमेंट. अब क्या ये इसके बाद ये सिंपल नहीं हो जाता है लिखना पॉइंट्स फ्लड मैनेजमेंट एंड ड्राउट मैनेजमेंट में? बिकॉज फ्लड, when I'll be only taking your disaster management, so I'll be teaching you floods, their causes, natural causes, anthropogenic causes, and management of floods. A new topic, urban floods, that has been repeatedly asked. तो फ्लड मैनेजमेंट के पॉइंट्स आपको याद होंगे, आप यहाँ पे लिख दोगे. बट इट वाज वेरी नेसेसरी. सी मेनी पीपल आर थिंकिंग वेरी ब्रॉडली. क्या बोला था तुलिका, आपने क्या बोला था? डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना. Yes, अब sir. एग्जाम हॉल में भी आप यही सोचते, एंड देन यू वुड हैव स्टार्टेड विथ वेरी जेनरिक पॉइंट्स. आप सीधा नहीं लिखते फ्लड मैनेजमेंट. एग्जामिनर वुड नॉट हैव गिवन यू दैट गुड मार्क्स, राइट? देन somebody was saying unseasonal rainfall. Who was saying unseasonal rainfall?
uneven nature of monsoon. अच्छा, uneven nature. Somebody said unseasonal rainfall. वो इंपॉर्टेंट है विंटर मॉनसून के लिए. अनसीजनल रेनफॉल विंटर मॉनसून में होता है. आपको याद होगा हमारी राबी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पर रेनफॉल हो जाता है. इसीलिए पंजाब हरियाणा यहाँ पर ओले पड़ जाते हैं, वेस्टर्न यूपी में भी, राइट. दैट इज अनसीजनल रेनफॉल. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉनसून. हाउ टू मैनेज दैट, उसके लिए अब आप सोचिए हाउ कैन वी मैनेज दैट. आपने ये प्रीलिम्स में पढ़ा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू think like you should think in an exam hall or when you see a question. Please tell me one way through which you can manage unseasonal rainfall. So better systems of arrival of prediction and prediction of monsoon rains. Our sir, with all our sophistication, you know, Indian Meteorological Department uses 17 indicators as statistic. फिर भी नहीं बता पाते कि मॉनसून कब आएगा. तो टेल मी समथिंग मोर कॉन्क्रीट जो हम कर सके एज यू एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. व्हाट कैन यू डू अनसीजनल रेनफॉल में? बहुत सिंपल एग्जांपल है. फसल बीमा योजना, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस. कैन यू डू दैट? यस, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन डू दैट. अब आपको फसल बीमा के सारे फीचर्स पता है, यस और नो? भाई राबी क्रॉप में इतना देंगे, खरीफ में इतना देंगे, हॉर्टिकल्चर में इतना देंगे, ये पार्ट प्रोटेक्ट होगा, इंश्योरेंस कैप नहीं है अब लग गया है वगैरह. ऑल थिंग्स यू हैव स्टडीड फॉर प्रीलिम्स, बट वी हैव टू ब्रिंग दैट एबिलिटी टू थिंक कि अच्छा ये स्कीम लिख देंगे अनसीजनल रेनफॉल में, राइट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एल नीनो, हाउ इज इट रेलेवेंट टू इंडिया? सो अगेन इट इज मॉनसून में ही एक थीम है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून में बहुत सारे सवाल पूछे गए बहुत सारे सालों में. इनफैक्ट लेटेस्ट में तो डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड what are the characteristics of monsoon that make it feed 50 million population? So is El Nino a characteristic of monsoon? Yes. Yes, it is a characteristic of monsoon. What is that characteristic? Interannual variability in rainfall. Between years there is variability in the rainfall that will come in monsoon season. किसी साल there is deficit year which your IMD names it, उसको बोलती है वो deficit year. किसी साल they will say normal rainfall. So when the monsoons are normal, it can be more than normal and there will be floods. So characteristic of rainfall है एक interannual variability. We will do the characteristics, don't worry. Here we are just identifying. आपको वो ability आपके मुंह में चम्मच दे के theme का सिर्फ text नहीं सिखा देना है. That is very easy and that is what you will find in any content. But you have to develop that ability that my spoon, my Bonvita, and Bonvita is this क्या बोलते हैं secret of there's some saying, no? नहीं, none of you. बूस्ट का है वो. अच्छा sorry, boost. Okay, my apologies. Boost of energy. हाँ, so how is it relevant to India? Again, अब is it how कितने लोगों को this looks like a very open ended question? आप बाद में आके बोलते हैं यार बहुत open ended question था. Is it open ended? Or can you write about drought? Can you write about socio-economic impact of monsoon? बताइए. Is it not asking about drought and significance? Second part. Yes, sir. How has modern technology contributed to better forecasting of the? Yes. Sir, in the El Nino question, will the theme not be pressure? El Nino question में theme will not be pressure because El Nino is characteristic of monsoon. That is interannual variability. See, monsoon में दो तरह की variability होती है, एक spatial variability और एक temporal variability. Monsoon varies with space. With space का मतलब कि does it rain similarly that it is raining in suppose western side of Western Ghat and maybe in Rajasthan? Monsoon season में in India at the same time some places having drought and some places having floods, right? So Yes. this is known as spatial variability of monsoon. Temporal variability due to time. अब आप याद कीजिए अपने prelims के knowledge से. बाकी लोग घबराना क्या बोलते हैं, घबराना नहीं है. I will be teaching this, okay? But अपने prelims के knowledge से याद कीजिए, monsoon जो है, monsoon का जो ये trough है, it keeps going up and down, and then there is something known as breaks in monsoon, right?
बट Yes. जब ये ब्रेक लंबा हो जाएगा, ऐसे ब्रेक को कहते हैं एल नीनो, विच इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन इन which ocean? Southern Pacific, Pacific. Southern Yes, Pacific, Southern Pacific. So Peruvian coast, sir. हाँ, पेरुवियन कोस्ट, अपवेलिंग विल स्टॉप, कोल्ड पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट, आप सबको पता है, वो चीजें कराऊंगा मैं. तो एल नीनो इज नॉट रिलेटेड. यस, इफ conceptually if you want to see, yes, it may be related to कि प्रेशर वहां पर चेंज हो गया, हाई प्रेशर से वहां पर लो प्रेशर हो गया, बट दिस फिनोमिना इज लिंक्ड विथ मॉनसून. दिस फिनोमिना इम्पैक्ट्स मॉनसून, दैट इज व्हाई वी स्टडी इट एज पार्ट ऑफ मॉनसून. वरना ये सारी चीजें, बारिश होना ही आपका प्रेशर से रिलेटेड है. अगर प्रेशर हाई होगा तो क्या बारिश हो सकती है? Will it ever rain in a place which has high pressure? No, sir. No. The most important condition for rainfall to occur is rise of air. हवा ऊपर नहीं जाएगी तो बारिश नहीं होगा. और हवा ऊपर कब जाती है? जब वो गर्म हो या ठंडी हो? Garam. Yes, yes. नहीं जिनको लगता है तो एक बार आप आज चाय बना के देखिए. So you'll see that it is, the vapor is going up. Okay. Now see, modern technology contributed to better forecasting of weather. Mention the particular efforts made by India in this regard. What is the basis of monsoon forecast now prepared by meteorological department? What has been the reasonably corrected corrections for the last 3 successive years? Now this is very, very factually asked. The theme is prediction of monsoon. अब ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, but I will give you a general idea that how does IMD predict monsoon. There are 17 indicators that it uses, and how it predicts, and what are the technological modern technologies it is using. But such kind of question, again, what could we have done? अगर suppose आज ये question आया होता और आपने नहीं किया होता ये theme, ये तो आ गया तो हम डिस्कस कर रहे हैं. If you had not prepared, what was the smartness you could have shown in this? You could have written about what is monsoon, characteristic of monsoon, and how its prediction is very difficult, and then written very in 1.5 paragraph the monsoon prediction. At least something you would have written, है ना? Which is not irrelevant to the answer. Yes or no? Yes. Okay. Which part of India receives more rainfall from northeast monsoon? Now, is it not repetition of this question? Question 1 and question 6. So Yes, it is sir. repetition, and UPSC repeats themes. It will keep repeating. So far, we have seen only monsoon has been asked. So it is, which part of India receives more rainfall from northeast monsoon? Tamil Nadu coast. And why, you just explain. What is greenhouse effect? What are its adverse effects? This is basically a question of not, it should not be done in geography, it will be done in environment. But what is the linkage of greenhouse effect in geography? What is the background that you will write? Can anybody tell me? Because we will study that theme. Sir, heat budget में इसका हो सकता है. Very good. Heat budget. Now, when we do temperature as a theme, a sub theme of temperature is heat budget. क्या heat budget का गड़बड़ होना ही global warming नहीं है? Yes, the sir. normal heat budget of Earth that has been disturbed by anthropogenic reasons, is it not global warming? Yes, sir. Is greenhouse effect per se bad? No. Without greenhouse effect, life would not have been possible. But the anthropogenic changes to the greenhouse gases, that is known as greenhouse. So you will all start to write that science answer. However, this was asked in geography. तो आपको लिखना क्या था? आपको हीट बजट लिखना था, साइंस वाला नहीं लिखना था कि GHG टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कैप्चर हो गए, वो आपने वो शीशे वाली फिगर दिखा दी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली. नहीं, यू हैड टू लिंक इट विथ हीट बजट. यू हैड टू राइट हीट बजट के ये कंपोनेंट है, इनकमिंग और आउटगोइंग, एंड राइट द चेंजेस मेड टू द components and how this is contributing to global warming. So is this clear that how a seemingly very easy question you can get more marks if you know the theme? That is यहाँ पर heat budget.
Okay. And what are the adverse effects of Earth's environment? So one more theme we will be doing in climate, that will be the last thing, applied climate, which is climate change. And we will see many questions have been asked on climate change repeatedly. Even cryosphere ka ek question abhi aapko dikhaunga, that has also been related to climate change. Okay. What steps can be taken for the same? We will see. You can write whatever steps are being taken जो आप climate change में prepare करेंगे. India's INDC efforts, etc., and world efforts, all those things you will be writing here. Next is what is intensity of rainfall? Discuss its importance to farmers. So we will be doing rainfall as a theme. क्योंकि टेम्परेचर के बाद हमको प्रेशर करना है, प्रेशर के बाद रेनफॉल करना है. Rainfall mein I am expecting that maybe some year they will ask process of rainfall, types of rainfall, and distribution. ये 3 चीजें करेंगे हम रेनफॉल में, बट उससे पहले प्रेशर और टेम्परेचर आएगा, वरना आप those of you who are not good in geography वो याद करने लग जाएंगे इसको, which most of us used to do after prelims कि हम याद करने लग जाते थे आंसर्स. बट if I'll teach you temperature and pressure तो आपको समझ आ जाएगा, रेनफॉल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. ओजोन होल, अगेन दिस इज इन एनवायरनमेंट. Environment में there are environment concerns, ozone hole, acid rain, global warming, then ocean acidification, then some things in news like bomb cyclone, etc. So those will be done in environment. This is primarily a question of environment, and maybe it will be taken there. Again, discuss the origin of monsoon in India. Is it not same as monsoon is known to be the energy released by the sea? Yes. Yes. Had there been no Himalayas, what would have been the winter climate in North India? Now, अब आप सभी को एक लाइन याद आ गई होगी जो आपने शायद हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, या फिर that they are the climatic barriers, they stop the Siberian winds. इसके बाद किसी को कुछ नहीं आता है ना? Yes or no? हाँ. All of you would write this one line and over. What will happen after that? So we will try to see the impact of Himalayas, that what would have happened if to the winter climate in India. We would have also connected it with monsoon. Explain the causes of Indian monsoon. I think this is again a repetition of causes of monsoon and origin of monsoon. Both are similar. Yes or no? Yes, sir. So that is the same thing, origin and causes. Discuss the distribution of winds and rainfall over India in the summer season. Now, what is the wind and rainfall in India in summer season? कौन सी रेनफॉल हो रही है समर सीजन में? मॉनसून. तो विंड क्या होगा? साउथ वेस्ट. मॉनसून और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, और रेनफॉल क्या हो रही होगी? मॉनसून. सो वी विल सी मॉनसून की रेनफॉल को एक्सप्लेन करने के 2 पार्ट होते, स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल. जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अभी आपको देता हूँ. माय ड्राइंग इज वेरी गुड. साउथ वेस्ट से ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट से ये विंड्स ऐसे आती हैं, दे आर ब्लॉक्ड बाय वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स आर अ क्लाइमेटिक बैरियर, सॉरी, दे आर अ ओरोजेनिक बैरियर, माउंटेनियस बैरियर. सो वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड, व्हाट काइंड ऑफ रेनफॉल विल इट रिसीव? विंडवर्ड रेनफॉल. उसको क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल. यस, इट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. विल इट बी हाई और लो? हाई. So 250 centimeter. Similarly, यहाँ north east में क्या होगा? Because of the orientation of the mountains, there will be very high rainfall. In fact, यहाँ पर एक place है, wettest place in the world. Cherrapunji was earlier. Yes, both of them are very near. Mawsynram and Cherrapunji are very near to each other. 1200 centimeter annual rainfall. Funneling effect also takes place. Come again. We have studied like funneling effect of the winds. That's why. Correct. Yes, very good. He is saying that we have studied the funneling effect. See, the mountains are like this.
पूर्वांचल गारो हिल्स और खासी नॉर्थ ईस्ट गारो खासी जैंतिया हिल्स, इसकी वजह से ये विंड्स क्या हो जाती हैं, दे गेट ट्रैप्ड हियर, they cannot escape because of the topography. So because of this funneling effect, it causes that much of heavy rainfall. और यहाँ पर खासी हिल्स जो है उसके विंडवर्ड साइड में कौन सी जगह है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी, है ना. इनफैक्ट सिक्किम जो है इट इज ऑन द लीवर्ड साइड एंड सिक्किम रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, राइट. सो अगेन इट वाज इनडायरेक्टली आस्किंग मॉनसून ओनली, बस इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि आपको विंड जब दिखाना है, सो इट वुड बी बेटर ना कि आप एक बार विंड का चेंज दिखा दीजिए कि विंटर मंथ में कौन सी विंड थी और अब समर में कौन सी आ गई. Will it not be good if you try to show the 180-degree change? Those of you who know, northeast से विंड आ रही थी and it became southwest. कितने डिग्री का चेंज हो गया? 180 डिग्री. ट्रू रिवर्सल, है ना. मॉनसून वर्ड का मतलब ही क्या है, मौसम और रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट. तो अब मैं विंटर में दिखा दूंगा कि कौन सी विंड थी, अब समर में ये 180 डिग्री रिवर्सल, एंड देन I will start mentioning distribution of wind and distribution of rainfall. Okay. Now explain how the Himalayan and Tibetan highlands play an important role in the development of southwest monsoon. So indirectly again, how many of you could identify कि ये origin of monsoon के बारे में पूछ रहे हैं? Yes sir, tropical jet streams originate from yes, you can definitely Tibet. mention tropical jet stream. Which jet stream? Sir, from Tibetan plateau. What is the name of that jet stream? You said tropical, you missed a word. Tropical easterly or westerly? Sir, westerly. नहीं यार, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो विंटर रेनफॉल कराती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना. ओके. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है, ऐसे आएगी और यहाँ पर जो प्रेशर सिस्टम्स होंगे इनको अंदर लेके जाएगी और रेनफॉल कराएगी, है ना, बे ऑफ बंगाल में. यस. हाँ, तो ट्रॉपिकल, इनफैक्ट एनसीईआरटी की लाइन ये याद कीजिए जिन लोगों ने पढ़ा है, as soon as subtropical westerly jet stream exits the subcontinent, इंडिया में क्या आ जाता है, मॉनसून आ जाता है. तो वो कहाँ से मदद करेगा, जब वो खुद ही उसके जाने से. अच्छा, ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी बदल गई इसलिए, because you went, that is also a contribution. Okay, very smart here. So winter rains in North India are largely related to jet streams and western disturbances. Explain the relationship. So one theme is jet stream. Now ऐसे terms को UPSC जरूर पूछ सकता है. What is jet stream? Origin of jet stream? Explain the climatic significance of jet stream. So jet stream as a topic we will spend 20-25 minutes in understanding. But now somebody was mentioning कि ये jet stream rainfall कराती है. तो winter में कौन सी jet stream rainfall कराती है? Prelims में पढ़ा होगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. हाँ, हिमालय इसमें क्या मदद करता है, या टिबेटन प्लेटू, ये इसके 2 ब्रांच बना देता है, और सदर्न ब्रांच जो है इंडिया में रेनफॉल कराती है. ओके, सो वील स्टडी दिस, डोंट वरी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? दिस इज अ सब थीम इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के पहले डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पहले तो कॉजेज पढ़ेंगे. टेम्परेचर किन कॉजेज पे डिपेंडेंट है, वो कॉजेज अगर समझ आ गई ना तो आप क्लाइमेट चेंज लिख पाओगे. अगर आपको पता चल गया कि टेम्परेचर किन कॉजेज पे डिपेंडेंट है, तो जो कॉजेज में चेंज होगा दैट इज द चेंज इन क्लाइमेट, है ना. सो कॉजेज इन टेम्परेचर वी विल बी स्टडिंग, देन वी विल बी स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में ही वी विल बी स्टडिंग IPCC 6th assessment report, AR6, and we will be studying temperature distribution में ही vertical distribution of temperature. और vertical distribution of temperature को आप किस नाम से जानते हैं? What is the famous name? That is temperature inversion. So we will study temperature inversion in detail
एक ही जगह आपको मिल जाएगा, उतनी चीजें याद करनी है आपको. व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. ये 4 चीजें ही याद रखनी होगी एक पेज में. यू विल बी एबल टू राइट एनी आंसर दैट कम्स. हाउ डज इट इफेक्ट वेदर एंड हैबिटेशन, बेसिकली ये सिग्निफिकेंस पार्ट उसका. कैन एनीबडी टेल मी एनी सिग्निफिकेंस, टेम्परेचर इन्वर्जन का सिग्निफिकेंस? सर हिल साइड पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ऐसा हो जाता है. किसके लिए? हिल साइड में कहाँ पर? हिल में जो बीच में रहते हैं, स्लोप्स पे जो रहते हैं. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. स्लोप्स पे रहने में आसानी हो जाती है. इनफैक्ट आप देखेंगे तो जनरली रिसोर्ट्स कहाँ बने होते हैं, वैली में या स्लोप्स पे? Many of you must have visited many hill stations. Did you stay in the valley or did you stay in the hill slopes? आपका होटल कहाँ था? स्लोप्स में होता है सर. स्लोप्स पे था, क्योंकि वहां पर रात को भी गर्मी होगी. The warmer air of the valley will go on the slopes. We will see. This is known as air drainage cooling. Okay. So this is a type of temperature inversion. वैली वाली लोगों के लिए समस्या होती है, फ्रॉस्ट वगैरह डेवलप हो जाएगा. इनफैक्ट रेनफॉल भी स्लोप्स पे होती है. दैट इज व्हाई somebody very rightly said कि जो लोग हिल्स में रहते हैं वो स्लोप्स में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर रेनफॉल भी होगा एंड नाइट्स आर नॉट फ्रिजिड. आपको लगता होगा कि ऊपर जाएंगे तो और ठंडा होगा, बट द रिवर्स हैपेंस. एनी अदर टेम्परेचर इन्वर्जन जो आपको दिल्ली में हो जाती है विंटर्स में? इनफैक्ट इट कॉजेज अ वेरी डिजास्टरस एक्सीडेंट इन योर, कौन सा हाईवे है ये जहां पर एक साथ बहुत सारी गाड़ियां? ज्यादा हो जाता है. हाँ, वेरी गुड. सो टेम्परेचर इन्वर्जन कॉजेज फॉग. हम देखेंगे कैसे फॉग कर देता है. ओके. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड? नाउ हीट आइलैंड एक अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वेयर मैन हैज मेड चेंजेस टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. सो वी विल स्टडी दैट. लास्ट में अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस पढ़ेंगे, जिसमें क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे होंगे, चेंजेस इन कोरल रीफ्स पढ़ रहे होंगे, and last we will be studying heat islands. Okay. Recent cyclone on the east coast of India was called Falim. So basically it is asking about naming of cyclones. Now this was unique that UPSC asked naming of cyclone, because that time that cyclone was in news. और एक उसके बाद सबने पढ़ा दिया कि भाई नेमिंग कैसे करते हैं, सो हम भी पढ़ा देंगे. बट सच अ क्वेश्चन कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकली साइक्लोन पढ़ते हैं किसी भी बुक से, वी नेवर स्टडी हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड. ओके, बट वी विल टीच यू नाउ. इट मे नॉट कम अगेन, बट यू शुड नो. नाउ साइक्लोन्स एज अ थीम कहां से आया? रेनफॉल और प्रेशर टेम्परेचर करने के बाद क्या आता है? अब ये बताइए, नॉर्मल प्रेशर है तो रेनफॉल हो रही है, बट इफ द प्रेशर्स बिकम टू लो और टू हाई, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना? yes or no? If the low pressure becomes intense, what will happen? Yes, sir. Cyclone. Cyclone. तो हम we will study a theme known as stability and instability. ये समझ आ जाएगा आपको तो साइक्लोन का एयर मास बनाना आ जाएगा. एयर मास बनाना आ गया तो आपको टेम्परेट साइक्लोन खुद बनाओगे, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होगी. यू विल बी एबल टू मेक टेम्परेट साइक्लोन. टेम्परेट साइक्लोन is also known as extratropical cyclone. So will it also include those fronts? Will it? See, air mass क्या है? Cold air mass और warm air mass. जब ये एक दूसरे के एरिया को इंक्रोच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Front. फ्रंट. कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट. जबरदस्ती कुछ भी नहीं देंगे आपको. Nothing will come illogical. So when warm air encroaches the area of cold air, warm front is formed. When cold air encroaches the area of warm air, cold front is formed. ये fronts आपस में जब interact करने लग जाएंगी, and when air is made to rise over a cold front, तो क्या बनेगा? Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called
excel mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program, which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Occlusion. Occlusion, see that this is a cold front and this is a warm front. When air is made to rise, Clouds, strato clouds बनेंगे. क्लाउड्स बनेंगे और होगा क्या? rain, रेनफॉल. और इसको Rainfall बोलते क्या रहेगी. है? इसी को तो कहते हैं Temperate. टेम्परेट साइक्लोन. बहुत बहुत आपने आज तक सोचा होगा पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, पर टेम्परेट साइक्लोन बनाने के लिए एयर मास बनाना आ जाए, एयर मास से फ्रंट बनाना आ जाए, और जब कोल्ड और वार्म फ्रंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड व्हेन वार्म एयर विल राइज ओवर कोल्ड फ्रंट, उसको क्या बोलते हैं? 4 लाइन में टेम्परेट साइक्लोन खत्म. सो टेम्परेट साइक्लोन वी विल डू. ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके रीजंस अलग है एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस, इसके रीजंस पे पूछा है, तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन, बिकॉज ये अभी तक पूछा नहीं है. दे मे आस्क सेपरेटली, दे हैव आस्क्ड causes of extra tropical cyclone, causes of tropical cyclone, comparison नहीं पूछा अभी तक, so that part we will do. So tropical cyclones are largely confined to Bay of Bengal, South China Sea, Mexico, etc. Why is it not asking about causes of tropical cyclone? yes sir, definitely. तो अगर हमको causes पता होने के लिए कंडीशंस पता होनी चाहिए ना कि साइक्लोन कब बनते हैं. Yes sir. साइक्लोन बनने के लिए बताइए, लो प्रेशर चाहिए सेंटर में या हाई प्रेशर? Low pressure. Low pressure. So will it form in Antarctica or will it form in the tropics where the water is warmer? Tropics. Tropics, क्योंकि जहां पर एयर कोल्डर है वहां एंटी साइक्लोन्स बनेंगे. So we will see what are the conditions for cyclone, और वो साइक्लोन्स के कंडीशन में आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे देंगे कि साउथ चाइना सी में ऐसा है, वो कंडीशन लिखेंगे आप, एंड देन यू विल गिव द कंडीशन जस्टिफिकेशन कि साउथ चाइना सी में ऐसा है, बे ऑफ बंगाल में ऐसा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऐसा है. Most of the unusual climatic are an outcome of El Nino effect. Do you agree? Now again it is asking El Nino. So अब थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट चेंज करना पड़ेगा. It is asking about unusual climatic happenings. What is one climatic happening for India due to El Nino? Drought condition. Drought और interannual variability in monsoon, है ना? Rainfall आपकी जो है monsoon rainfall will be bad. India will have a bad monsoon year, right? Yes. And drought, yes. So drought, somewhere it will cause floods, है ना? So for example, in the coast of US and in the coast of Australia, it will cause floods. So those parts also we will write. El Nino का effect basically लिखना है. El Nino का effect सिर्फ इंडिया में नहीं होता. El Nino का effect और जगह होता है. Okay. So that part only we have to see. But if you wanted to write it smartly, you could have written about monsoon and you could have written some of the effects कि ये forest fire cause कर सकता है कहीं पर, drought होने की वजह से forest fire भी हो जाएगा. Then it causes floods in some excessive rainfall in some areas. So those things only it had to be written. How far do you agree that the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing landscape? Because of changing landscape, Indian landscape will change. Because of that, your monsoon is changing. So first, is it not asking that what are the factors on which monsoon depends, and then you will write what are the changes that we are making to that landscape? Yes or no? Yes sir. Yes. So
क्वेश्चन में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि क्या बिहेवियर में चेंज हुआ, बट इफ दैट वर द केस, व्हाई इज इट आस्किंग इन अ ज्योग्राफी पेपर? सो ज्योग्राफी में पूछ रहे हो तो पहले आप मॉनसून के कॉजेज लिखिए और उसके बाद आप क्या उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू थिंक एंड राइट देयर. ओके, discuss the concept of air mass, explain its role. Concept of air mass, we will be studying stability or instability mein. Please tell me the most important role of air mass. What is the impact of air mass? What does air mass cause? Rainfall. What kind of rainfall? Rainfall से पहले क्या होगा, क्या बनाएंगे? Fronts. Clouds. Cloud. अरे यार, पहले टेम्परेट साइक्लोन बनेगा ना. अच्छा. टेम्परेट साइक्लोन इज व्हाट? राइज ऑफ वार्म एयर ओवर कोल्ड फ्रंट. जब एयर राइज होता है तो क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल होता है, दैट इज फाइन. बट व्हाई इज एयर राइजिंग? That air is rising because there is formation of front, है ना? What characteristic can be assigned to monsoon? So basically it is asking about characteristic of monsoon. We have already identified this theme. How does cryosphere affect the global climate? Can anybody tell me the theme? Geography से related theme क्या लिखेंगे आप इसमें? Heat budget लिख सकते हैं सर. Okay, one thing is heat budget. Can you go more precise and can you tell me anything precisely in heat budget that is changing with respect to cryosphere? Cryosphere is the Albedo. very good. Albedo. Cryosphere क्या है? Snow वाला इलाका है ना, which is very very cold. Cryo means what? At abnormally low temperatures, right? Many of you who are interested in science and space, आप cryogenic engine के बारे में पढ़ते होगे, है ना? GSLV, does it have cryogenic stage? देखा करो. Cryogenic stage में क्या होता है? Fuels are stored at very less temperature, -150, -120. तो cryosphere क्या है? That is, it is the sphere which is at very low temperature. So you know snow का albedo कितना होता है? Greater than 90%. Now if this is also melting, snow is also melting, Earth's albedo will change, and everything that you have read उसके बाद वाला वो part you have to write. But ये दो चीजें identify करनी थी. आप सुनते रहते हो कि कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखना है. कीवर्ड नहीं लिखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या है. उस थीम के कीवर्ड्स आप लिख दीजिए, राइट? सर इस बार जो क्वेश्चन आया था वो ये अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो ग्लेशियर मेल्ट होता है उससे ये ऑक्यूपेशन सेम क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन है. अंटार्कटिका इज व्हाट? क्रायोस्फीयर. अंटार्कटिका इट रिमेन्स कोल्ड पोल थ्रू आउट द ईयर, है ना? बट अगर अंटार्कटिका भी पिघलने लगेगा तो यही हो रहा है, क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, राइट? नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग थीम्स? पहली बात तो आपको थीम आइडेंटिफाई करना सिखाना था क्लाइमेट में. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? और एटलीस्ट थोड़ा बेसिक आइडिया लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था लेकिन क्वेश्चन देख के अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ ये थीम हो सकता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है पहले कभी. सर दिस अर्बन हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट इट हैज केम अराउंड 2-3 टाइम्स. हाँ करेक्ट. सो अर्बन हीट आइलैंड कैसे बन रहा है? अर्बन हीट आइलैंड इज बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशन, है ना? कंक्रीटाइजेशन. कंक्रीटाइजेशन इज वन. आप सभी जगह चेंज करेंगे. यू विल चेंज द हाइड्रोस्फीयर, यू विल चेंज द water sphere, you will change the atmosphere and you will change the biosphere. चारों जगह चेंज करेंगे. Any doubt till here कि सर ये थीम आइडेंटिफाई करने में मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया? Anybody? आ गया सर, थोड़ा आइडिया लग रहा है. हाँ, थोड़ा क्वेश्चन का डर कम हुआ एटलीस्ट कि हाँ क्वेश्चन में जो है एटलीस्ट दैट रैंडमनेस हैज डिक्रीज्ड कि अरे क्या पूछते थे, या फिर दैट जनरल आइडिया कि क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है. नहीं, क्वेश्चन इज प्रिसाइजली ऑन योर सिलेबस, यू जस्ट हैड टू आइडेंटिफाई इट. Okay, shall we study a small theme? I'm not going in detail today because of respect for West Bengal PCS and Jammu Kashmir PCS students. Please, they will also have to travel and
How many of you are having in, अच्छा आप आज जो आए होंगे उनका तो होगा ही नहीं, that is why you have come. So let's Jammu start. Kashmir TCS has been postponed. अच्छा, it has been postponed. Yes, sir. तो West Bengal भी करा देते हैं. And what was the reason given why it has been postponed? But there was some clash between some exams. That's why. अच्छा अच्छा है, because of some exam date. Yes, sir. Exam did clash. Okay. Anyways, let's start a theme. क्लाइमेट में सब थीम्स क्या है, पहले क्लाइमेट का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लग जाए कि क्लाइमेट में पढ़ना क्या क्या होता है. व्हाट आर द थिंग्स वी स्टडी इन क्लाइमेट? फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर. टेम्परेचर में क्या पढ़ना होता है? इंसोलेशन. इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ऑल ऑफ अस आर सोलर पावर्ड, राइट? The only other energy which is not solar powered is Nuclear. nuclear. Geothermal. Sir, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होते हाँ, हैं कुछ. geothermal. So incoming solar Nuclear radiation. नहीं होगा क्या? न्यूक्लियर में भी कहाँ से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये वो वगैरह, वो कहाँ से बने? न्यूक्लियर इज एन आर्टिफिशियल. सोलर से कैसे? how will those elements be formed? सर पक्का बताइए, ये यूपीपीसीएस में आया था. हाँ, जियोथर्मल एग्जांपल है उसका. जियोथर्मल टेक्स द हीट ऑफ द अर्थ. एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है, आपके बहुत सारे एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है. सन के अपन ये भी कह सकते हैं, सन के अंदर भी फ्यूजन चलता रहता है. करेक्ट. नहीं, but these elements, they will be driven by solar energy. Everything is driven by solar energy. Life is driven by solar energy. टेक्निकली देखा जाए तो जियोथर्मल भी सोलर एनर्जी से है, क्योंकि अर्थ ही बना है उस प्रोसेस से. बट दैट एनर्जी दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी, उसको बोलते हैं कि इट इज नॉट ड्रिवन बाय सन. सर जियोथर्मल में भी रेडियो एक्टिव डीके होता है ना थोड़ा? करेक्ट, रेडियो एक्टिव डीके भी हो सकता है, बट इट इज प्राइमरीली द हीट ऑफ अर्थ, है ना. अर्थ इज हैविंग, यस यू कैन से कि वो हीट आया कैसे, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट. ओके, सो टेम्परेचर में इंसोलेशन और इसके कॉजेज, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ इसलिए बिकॉज ये समझ आ गया तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स. इंसोलेशन से आ जाएगा टेम्परेचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. दिस आई वोंट टीच इन डिटेल बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू राइट दिस. Sir, causes of what? Causes of incoming solar radiation से जो distribution हो रहा होगा, like what are the factors on which insolation depends. एक बात बताइए, पूरी धरती पे सभी को एक समान सूर्य की किरणें मिलती हैं? नहीं. Different places receive different sunlight, तो उसका कुछ ना कुछ cause होगा, है ना. For example, people living in Greenland and people living in Delhi, are they receiving same sunlight in the month of June? No, sir. No. So that is tilt of axis. एक cause पड़ेगा, है ना. Factor on which this is dependent is tilt of axis, right? So latitude also determines. हाँ, all of this will ultimately lead to that temperature is a function of latitude. But latitude आया कैसे? क्योंकि अर्थ के, मान लीजिए ये सन है, इसके सामने मैंने अर्थ को ऐसे रख दिया, तो ये पूरा हिस्सा तो एक साथ हीट होना चाहिए था ना, एक साइड. Yes, yes. बट अर्थ ऐसा नहीं है. अर्थ कैसा है? Tilted. ऐसा tilted. Yes. So Three and half. हाँ, correct. 23 and a half to its which axis? Rotating axis. 66 and a half for its other axis. Anyways, so temperature and its distribution, most important topic we will be studying here is heat budget, which will be very useful in your climate change answers. Then we will be studying temperature inversion. टेम्परेचर पढ़ने के बाद प्रेशर. प्रेशर you will have to understand
द प्रेशर बेल्ट्स, और आज तक जो आप याद करते थे यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, विद इन 10 मिनट्स वी विल अंडरस्टैंड यहाँ हाई क्यों है, यहाँ लो क्यों है, और आप अपने विंड खुद बनाइए. मोस्ट ऑफ माई ज्योग्राफी स्टूडेंट्स नो, उनको विंड बनाना आता है, आप भी सीख जाएंगे. प्रेशर बेल्ट जब बनाना आ जाएगा तो इतनी बात तो सबको पता है ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड जाती है, यस और नो? यस. और कोरियोलिस लगा के उसकी डायरेक्शन सेट कर लेंगे. तो प्रेशर बेल्ट बनाना सीखना बहुत जरूरी है, हम 10 मिनट उसमें देंगे. टेक्निकली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, बट दिस विल हेल्प यू इन आंसर फॉर्मेशन लेटर. वॉट एवर नेक्स्ट वी स्टडी वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू मग इट. ओके, सो प्रेशर बेल्ट्स वी विल स्टडी. अब मैं इसमें हेडली सेल, फेरल सेल और ट्रॉपिकल सेल ये नहीं पढ़ाऊंगा. दिस इज दे आर नेवर गोइंग टू आस्क, and it is from prelims perspective, but I will teach you the pressure belts as on earth, कि इक्वेटर पे कैसा प्रेशर है, टेम्परेट एरिया में कैसा प्रेशर है, ट्रॉपिकल एरिया में कैसा प्रेशर है, बिकॉज उससे फिर विंड्स बन जाएंगी. तो प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया तो विंड्स एक टॉपिक हो जाएगा. अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, ओशन के लिए पूछ लिया है, विंड के लिए नहीं पूछा है. फैक्टर्स कॉजिंग विंड्स एंड फैक्टर्स कॉजिंग विंड्स के बाद टाइप्स ऑफ विंड्स. यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ पिकिंग अप, वो बोल देगी कि recently a wind Sirocco was in news which caused havoc in Mediterranean area. What are the what is the reason for the origin of this wind and what are the climatic significance of such winds? अब आप सिरोकू, आपने सोचा यार सिरोकू तो मैंने पढ़ा नहीं था, बट हाँ सिरोकू इतना पढ़ा हुआ कि एक लोकल विंड है, तो लोकल विंड के बारे में लिख दीजिए. लोकल विंड कैसे जनरेट होती है, वो क्या चेंजेस लेके आती है, एंड उसका क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस लिख दीजिए. So we should know the type of winds. And जब प्रेशर और विंड पढ़ लिया, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर पढ़ लिया, तो रेनफॉल पढ़ना आसान हो जाएगा. एंड रेनफॉल में वी विल बी स्टडिंग, आई विल नॉट बी टीचिंग यू क्लाउड्स एक्सेट्रा. वेरी ब्रीफली आई विल बी टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेनफॉल, दैट इज ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी समझ आ गया तो रेनफॉल समझ आ जाएगा. प्रोसेस ऑफ रेनफॉल, types of rainfall from Indian perspective, because question will come on this only. India में कैसा कैसा रेनफॉल हो रहा है. अभी तक आपने देखा होगा it kept asking नॉर्थ ईस्ट मानसून से विंटर में कैसी रेनफॉल हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून से. सो इट kept asking about rainfall in India. So we will study that only, types of rainfall, Indian perspective. Then applied climate. Here we have to study instability and stability. इससे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, बेसिकली हम एयर मास. वी विल जस्ट स्टडी व्हाट इज एयर मास, क्योंकि एयर मास समझ आया तभी आप टेम्परेट साइक्लोन समझ पाएंगे. एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द डिफरेंस. हियर वी विल बी आल्सो डूइंग करंट में से बॉम्ब साइक्लोन. व्हाट इज अ बॉम्ब साइक्लोन. फाइनली वी विल बी स्टडिंग urban heat island, climate change, and we will be focusing on IPCC assessment report 6th and special report. This will be done in one class. It will cover 1.5 class. It will be covering everything that can be asked in climate. Yes, one more thing, India's climate. Here we'll be doing monsoon. When I say monsoon, basically I'm referring to summer monsoon, and we will be doing winter monsoon. Is monsoon में I'll be covering everything, causes of monsoon, characteristic of monsoon. We'll be also doing in El Nino etc. monsoon में ही, and winter monsoon, basically what is happening in the rest of the season and its impacts, significances. What are the socio-economic impacts, political impacts, cultural impacts? All those things we'll be studying. This will cover the first theme of geography, climate. Okay. Any doubt in this? Sir, how much time will it take? 1.5 class. All Because these. Climate is the only thing that takes time. Okay.
Okay. Climate के बाद we will be doing, second thing that we will be doing is physical geography. Third thing that we will be doing is economic geography, and geography for mains perspective, that will be over. That is those are the three broad themes on which it is asked. Physical geography में ही आपको disaster management कराऊंगा. When I am going to teach you, suppose earthquake, there only I will teach you earthquake management. वो एक साथ हम करेंगे earthquake के causes, earthquake का impact and earthquake management. So we will be doing it in an integrated manner, even though question may be coming in your GS3, but we will study it as part of geography disaster management. Okay. So let's, any doubt till here? Wait out. Yes, sir. So let's start studying insolation. What are the causes of insolation? Insolation is basically your incoming solar radiation. So किन factors पे depend करेगा? Factors on which insolation depends. बताइए. Tiltation of Earth. What of Earth? Tiltation, tilt of Earth. Tilt of Earth. Okay. What else? Latitude. Latitude is a factor Angle of of all. incidence. So we will divide it into two, primary factors and secondary factors. और primary factors, क्योंकि इसी मॉडल में आपको आंसर लिखना है. Primary factors and modifiers. What are the primary factors? First is angle of incidence. Angle of incidence को याद रखने के लिए just remember one example. How many of you बचपन में आप टॉर्च को लाइट करते थे and you used to change its angle? जितना आप स्लांट करते थे टॉर्च को, it used to cover a broader area but लाइट कम हो जाती थी, और जितना आप उसको सीधा रखते थे it used to give light in a smaller area but very focused light. Yes or no? Yes. किया होगा ये एक्सपेरिमेंट बचपन में? Can you repeat once again? Okay. Did you do that experiment as a child? You used to hold a torch. If you point out straight to the wall, so it would make a very bright circular Beam of light. Yes. beam of light. But if you slant it, it is covering a broader area, but the illumination is very poor. You can't see the lizard properly, right? Yes. So that is angle of incidence. So even Earth is spherical. So sun's rays, it is going like this. Only in a small area, that is the tropics, Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, is receiving direct sunlight. Okay. So just write one line. Almost spherical shape of the Earth creates variation in the solar radiation. Tilt of Earth's rotational axis. Earth's tilt, we already know. Earth is like this. So again, this area is only receiving direct sun rays. Rest of the area is receiving slanted or angular. तो कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है that the direct rays of the sun, they are found only within where? Tropics. Tropics. Within the tropics. Yes. Then third point is duration of sunlight, which is actually 1+2. ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कैसे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस से और टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस से. सो दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन कि एक जगह सन की रेज कितनी आ रही है. बट ओवर एंड अबव दिस देयर विल बी सम मॉडिफायर्स. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफायर?
आज how many of you are in Delhi today? Did you receive less sunlight or more sunlight? Less sunlight. What was the reason? There was rainfall, clouds, Transparency of है ना? atmosphere. Yes, transparency of atmosphere. मॉडिफायर एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया. किसी को नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा. Sir, do these factors, angle of incidence and tilt of Earth's axis, do they have same effect? They produce the same effect? Yes, they will produce same effect. मतलब they will produce ideal belts. Slanted. हाँ, they will produce ideal belts. यानी कि इक्वेटोरियल बेल्ट पे सबसे ज्यादा सन की रेज आएंगी. उससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे रेज इंसोलेशन विल कीप डिक्रीजिंग. Yes, okay. और अगर ऐसा होता तो इक्वेटोरियल एरिया में सबसे ज्यादा हीट होनी चाहिए थी. टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल एरिया वुड हैव बीन मैक्सिमम. बट आपको पता है कि टेम्परेचर कहाँ का मैक्सिमम होता है, इक्वेटर का या ट्रॉपिक्स का? ट्रॉपिक्स का. तो उसका भी फैक्टर क्या है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? देन लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल. लैंड की प्रॉपर्टी क्या है? इट गेट्स heated up very quickly. This component gets heated up. Rock is a poor conductor. So land gets very intensely heated. So water जो है it does not get heated that easily. Water क्या है? It is more transparent to sun's rays. तो larger area heat हो रहा है. तो बहुत जल्दी heat नहीं होगा, बहुत जल्दी cool down नहीं होगा. अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? सो कोस्टल एरियाज विल दे हैव एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर और विल दे हैव मॉडरेटेड टेम्परेचर? Moderate. हाँ. नाउ अ क्वेश्चन यूपीएससी में आस्क, चेन्नई's climate is different than the climate of Delhi. What is the climatic principle behind it, and what vagaries of climate do we need to prepare ourselves for? तो चेन्नई की क्लाइमेट जो है वहां पर there is moderation because of sea. Delhi is facing continentality effect. Principle है continentality effect. It is surrounded by land. Vagaries of monsoon क्या होगा? Sorry, vagaries of climate क्या होगा वहां पे? Heat stroke, है ना? Yes or no? Heat stroke होता है ना in such areas? नहीं? Yes. Yes. Then next, altitude. Does altitude affect how much sunlight you will receive? Why do people go to Manali, people of Delhi? So because there are the composition of greenhouse gases is very less. I think where this was asked in prelims in a conceptual manner कि पता नहीं आगरा का और दार्जिलिंग का लैटिट्यूड सेम है, बट आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री रहता है विंटर्स में और दार्जिलिंग का 3 डिग्रीज. व्हाट इज द रीजन, राइट? इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी और यूपीपीसीएस अभी जस्ट रिसेंटली. Yes, sir. नहीं? Yes. So what is the reason? Altitude of Darjeeling is high. अगर altitude high है तो वहां पर टेम्परेचर क्यों कम है? नॉर्मल Gases कम है वहां पे सर, especially greenhouse gas. हाँ. So somebody said environment lapse rate, यानी कि अर्थ जो है सन की रेस से हीट नहीं होता. अर्थ किसकी रेस से हीट होता है? रिफ्लेक्टेड IR की वजह से. टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. यस, IR रेज ही गर्मी करती है, चाहे सन की हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो. So earth is heated from the terrestrial radiation because they will be captured by clouds, they will be captured by greenhouse gases. इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ज्यादा हाइट पर ग्रीन हाउस गैसेस कम होती है, हवा भी कम है. देयर इज लेस डेंसिटी ऑफ एयर, there are less number of clouds present, there are less number of greenhouse gases, so those places are cooler. Earth is heated from below. एक लाइन आप लिख लीजिए, earth is heated from below
that is from the reflected terrestrial radiations. ये समझ आ गया यहाँ तक? Modifiers. One more modifier is aspect or direction of slope. ये बताओ, सन की तरफ मुंह करके रहोगे तो ज्यादा धूप लगेगा या पीठ करके? इस साइड लगेगा तो दोनों में ही, आप ही की पीठ है. बट ऑन अ माउंटेन द सदर्न स्लोप्स आर well lit. So these are factors on which insolation depends. Okay. Now we'll not go too much in today's class in detail. Temperature and temperature inversion, those things we will do in next class. Just write a question. Same question you can write, which came in UPPCS. Agra and Darjeeling are roughly at same latitude, but the winter temperature in Agra is 16 degree and Darjeeling is 3 degrees Celsius. Identify the reasons for the same. Also state on what other factors the temperature of a place depends. I am giving you 7.5 minutes. Whoever writes, I will check your answer live. Please write. सात और 5 12, आधा 12.5 and discount. Sir, I wrote the answer, but not a very good one. Hello, sir. Yes. Sir, I Did you submit the answer in the group? सॉरी सर, आपने आंसर सबमिट किया ग्रुप? कहाँ पे सबमिट करना है? You could mail it. What's your email ID? Or you could just send in the group also. But today all of you will get, or by tomorrow morning you will get a portal, course portal. वहाँ पर आप आंसर सबमिट कर सकते हैं. It will be evaluated. But for now, you have submitted in time and I'll evaluate it here only. Please send it here. This is your first page or second page? This is the first page. क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है इसमें. अच्छा, ये ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड से चालू किया आप. Which is your first page? Solution yes, ये जो sir. लिखा है. अच्छा, हाँ, ये temperature primarily depends upon the amount of insulation received by a place of particular latitude. But if the latitude of two places, okay, let me save this. Sir, this is my first answer. No worries. You have written, that is good.
एक तो क्या है कि आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है. Yes, sir. स्ट्रक्चर इज इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, है ना. Yes. Question was Agra is at same latitude and still it is getting. So एक लाइन में पहले तो आप इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई कीजिए. डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन, व्हाई आगरा at the same latitude is having different temperature than Darjeeling at the same latitude, because places at different altitude have Different temperatures. different temperatures. Darjeeling is a hilly area at higher latitude. ये आपने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया. And then you write factors on which temperature depends. And first factor में altitude को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे. The notes for this class that you will get, उसमें altitude के बारे में 4-5 लाइनें आपको मिलेंगी. Altitude of a place, here you can explain same. Earth gets heated from below or reflected terrestrial radiation. Therefore, at higher altitude areas, lesser greenhouse effect and hence less heat. Then you can write other factors. Other factors we have already discussed. Okay. So transparency. अब इसमें other factors को आप दो पार्ट में बांट दीजिए, primary factors and modifiers, and then write the factors. What will you write in conclusion? For such an answer, what will you write in conclusion? So temperature is not solely decided by latitude of a place. Temperature is primarily determined by latitude of a place, but not solely driven. But यहाँ पर और better क्या लिख सकते हैं आप? Generally I say कि कोशिश कीजिए आप कि other parts of the subject से link कीजिए, other parts of syllabus से link कीजिए in writing conclusion. So यहाँ पर can you tell me any difference between Darjeeling and Agra? Darjeeling, because of its altitude, what is it used for? What is the most important economic activity of Darjeeling? Hill stations, Tea tourism. cultivation. हाँ, tourism है, but primarily it is better known for Tea Yes. cultivation. Tea cultivation. yes. And Agra is known for what Taj is the Mahal. अरे यार, economic activity. हाँ, you can Tourism. exactly, The tourism, na. agriculture. I am talking in geographical sense. What is the one district, one product of Agra? Leather. Which one? Leather work, है ना? Leather work के लिए जाना जाता है ना Agra. So Agra is known for leather work. Tourism मत लिखिएगा, वरना ऐसी गर्मी जगह पे तो आपने बना रखा है तो लोग चले जाते हैं. So this is a good conclusion. But the idea I want to give you in writing a conclusion is it may not necessarily be with that topic only. You can write a conclusion which links it to other parts. For example, economic geography. But इससे related होना चाहिए. Altitude की वजह से दार्जिलिंग में आप चाय उगा पाते हैं. Darjeeling tea is having GI tag, India's first GI tag. Agra, because of its continentality, it is a warm place, very high temperatures, etc. It is famous for leather work. Okay. So we'll stop here. Next class there will be 2.5 hour class. We will write 3 to 4 answers in class and we will study those themes. Please be present. The classes will be Tuesday, Thursday and Saturday. 3 days a week. If need be, if we will see that the syllabus is far behind, then we will try to increase. For now, we will be doing it on Tuesday, Thursday and Saturday. Now, some of you are asking theme क्या होगा next class के लिए? What should you study? Theme. So you can study
temperature, pressure, rainfall, tropical and temperate cyclone, urban heat island, climate change, and India's climate. Those of you who want to do it from pre-cum mains perspective, you can study India Physical NCERT and Fundamentals of Physical NCERT. और ये climate change जो है, that we will do from current. जिनको नहीं पढ़ना है वो क्लास के बाद उनकी मेहनत खत्म हो जाएगी. After attending the class, you will not require to read. I mean, although you should read that NCERT from prelims perspective, but उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Most of it will be covered in the class. So you can spend time on your optional. Those of you who are writing mains this year, focus your time on optional, because today is what, Friday. So there is Saturday, Sunday, Monday, 3 days. So focus your time on optional. Then focus your time on current. I think many of you are having class on Sunday, Samachar Vani plus class. So you will be 8 to 10 themes will also be done for you. So utilize that time. अगर नहीं लगता है कि मुझे ज्योग्राफी का देखना है, so आप एक बार NCERTs देख सकते हैं. अगर आपने प्री से पहले उनको पढ़ी है तो it is better for you. So we'll be studying and completing these things in next class on Tuesday. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी लोग जाइए. सर मेरा भी आंसर चेक कर दीजिए ना. हाँ, आपका आंसर आपने मेल किया है या व्हाट्सएप पे भेजा? व्हाट्सएप पे. अगर आप अभी मेल कर दीजिए तो आई विल बी एबल टू चेक इट. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you.